Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is markets. Learning topics, meaning of market, factors which affect people's access to markets, advantages of markets, indirect channels, marketing, markets and equality, kinds of markets, role of intermediaries. A market is a part and parcel of our daily lives. We go there to get the things we need every day. We buy a variety of goods from there, ranging from vegetables, toothpaste, medicines, clothes, stationery items, electronic goods, etc. तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए सारा सामान जो भी आपके घर में आता है आप मार्केट से ही खरीदते हैं. मीनिंग ऑफ मार्केट. We have all visited the neighborhood market close by to our homes. These small markets consist of a number of small shops selling household items and food products. A market is more than just shops. In this chapter, we will see the actual meaning of market. In simple terms, a market can be described as a place where people buy and sell goods. Buyers and sellers carry out an exchange of goods, service and information, or trade for commercial gains. This process is based on the basic principles of demand and supply. The demand and supply chain is regulated by the number of buyers and sellers present in the market. Indian markets are mostly unorganized and highly competitive with a large number of buyers and sellers. If there are more buyers than sellers, the demand goes up and there is a rise in price. If there are more sellers than buyers, prices come down due to excess supplies. तो मार्केट आपकी वो जगह होती है जहाँ पे आपको हर टाइप का गुड्स मिलता है. आपका जो मार्केट फैक्टर्स होता है वो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर करता है. अगर आपकी जितनी ज़्यादा डिमांड है उतनी ज़्यादा सप्लाई अगर नहीं है तो उसी के बेसिस पे जो आपके सामान का प्राइस है वो भी वेरी करता है. Advantages of markets. A market has many advantages for us that are as follows. A market acts as a link between the producer and the consumer. It generates employment by encouraging production activities and distribution channels. In this way, it is helpful in generating income of the people. It helps in improving people's standard of living by offering a wide variety of goods and services. तो आपका जो मार्केट है उसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं वो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं. फायदा ये है कि कंज्यूमर्स और बायर्स के बीच में एक लिंक ब्रिज हो जाता है. बहुत सारी जॉब्स इसकी वजह से निकलती हैं. उसके साथ साथ जो लोग होते हैं उनको अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स भी देखने को मिलता है. In a market, consumer is the king. A market enables the consumer to make his/her own choice according to his/her purchasing power. A market makes the consumer aware of the existing commercial situations. The consumer can easily know about various similar goods, their quality and prices by conducting a research in the market. Accordingly, he can make a rational decision regarding the purchase of goods. As per the demands of the market, the producer plans to design the products that could satisfy the needs of the people. तो अपनी purchasing power capacity के according आपके पास कितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप अपनी choices पे depend करके चीज़ें खरीद सकते हैं. उसके अलावा जितनी भी चीज़ें consumers को चाहिए होती है, जिस टाइप का ट्रेंड चल रहा होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपनी सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिज़ाइन करते हैं जिससे कि उनके जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाए. Marketing. Marketing is a vital procedure that most producers these days undertake before starting to manufacture products. Marketing makes a study of what a customer would prefer by way of quality, price, type of packaging, etc. Marketing also keeps in mind competing products and their features. This information is passed on to the manufacturer who produces goods as per the study. तो आपकी मार्केटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. मार्केटिंग करने से ही लोगों को पता चलता है कि करंट टाइम में आपने क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करी है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और वो कितने रुपयों का है. तो मार्केटिंग फोर्सेज इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है. मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग, एज यू हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर, इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट in the process of marketing. Advertisements create awareness in the market about the product and these days create a demand for it. तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. उसी से पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट करंटली मार्केट में चल रहा है, उसका फीचर क्या है और किस तरीके से आपको वो मिल सकता है. Kinds of markets. We see several types of markets around us. Weekly markets, the neighborhood marketplace and the shopping malls are all examples of markets. तो आपकी अलग अलग टाइप की मार्केट्स होती है जिसमें वीकली मार्केट्स, मंथली मार्केट्स और आपकी जितनी भी वेजिटेबल, फ्रूट, मॉल्स होते हैं ये सारे उसमें इंक्लूडेड होते हैं. नंबर 1, वीकली मार्केट्स. These are held once a week on a specified day in a particular area. They are more often seen in rural areas, small towns and in the outskirts of big cities. Weekly markets do not have permanent shops.
Not much money is required to set up shop in a weekly market and most of the goods sold are not branded. Hence the prices are generally low. तो वीकली मार्केट जो होती है वो हफ्ते में किसी भी एक दिन लगती है. यहाँ पे ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं होती है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जितना भी सामान होता है प्रोडक्ट्स के जो पैसे होते हैं वो कम होते हैं. नंबर 2, नेबरहुड मार्केट्स. दे कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज परमानेंट शॉप्स दैट cater to the shops, stationery, hardware shops that sell ready-made garments, vegetables, etc. The owners of permanent shops have to pay rent, electricity bills, phone bills, etc. for their shops. Hence, they charge higher prices. तो neighborhood markets में आपकी shops होती हैं, vegetable shops होती हैं, hardware होती हैं, उनको अपनी दुकानों का rent देना पड़ता है, electricity bill देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ के products थोड़े से महंगे होते हैं. 3. Supermarkets and malls. In large cities, we find supermarkets and shopping malls. They are very big, usually air-conditioned, shopping complexes that have shops selling a variety of goods and services, but it costs a lot of money to maintain a shop in a mall. तो बड़ी बड़ी शहरों में, सिटीज़ में, टाउन्स में आपको सुपरमार्केट या मॉल देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको एक ही जगह पे बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ें मिल सकती हैं अलग अलग वैरायटी की, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए इनके अंदर पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स भी काफ़ी महंगे होते हैं. Most of the goods sold are branded and expensive, but the customers get benefits such as credit card schemes, parking for vehicles. महंगे होते हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन अलग अलग चीज़ें भी कस्टमर्स को मिलती हैं, सर्विसेज जैसे कि क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, डिस्काउंट्स मिलते हैं और पार्किंग के लिए जगह भी मिलती है. Factors which affect people's access to markets. People's access to markets depends upon many factors. The chief among them are, however, the following. Number 1, availability of things. The availability of different things is the factor which affects people's access to the market. The different things of daily use, fruits, vegetable, groceries, milk, butter, drinks, breads, etc. are not available in a particular market. Nobody would go to such a market. There should be a chemist shop, a grocery, a stationery, a doctor's clinic, a sweet seller's shop, a cloth merchant and a tailor's shop. If there is a post office, a police station, hospital there, it will be an added attraction. तो अगर आपके आसपास ऐसी मार्केट है जहाँ पे ना तो मेडिकल शॉप है, ना ही मिठाई की दुकान है, ना ही कपड़ों की दुकान है, ना ही आपकी वेजिटेबल और फ्रूट्स की दुकान है, तो उसके आसपास लोग रहना पसंद नहीं करते हैं. ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं. Number 2, convenience. Then such a market should be quite nearby so that the customers go there at their convenience. If it is far off, people would avoid going to such a market. People won't like to live in such a colony where no market exists or if it exists quite far off. तो लोगों को ज़्यादातर ऐसी मार्केट्स की या तो पास रहना पसंद है या फिर हल्का फुल्का भी दूर हो तो चल जाता है, लेकिन बहुत दूर है या फिर ऐसी मार्केट है ही नहीं आसपास तो लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं. Number 3, quality. Almost all customers prefer to buy things of good quality. If any market has to flourish, it must maintain its standard and provide things of good quality to the customers. People would not compromise with any shopkeeper who supplies goods of inferior quality to them, as such things can play havoc with their health as well as the well-being of their families, especially their children. तो हर किसी को जो प्रोडक्ट कोई खरीदता है तो हमेशा उसके दिमाग में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सवाल हमेशा रहता है. सबको चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो अपने लिए खरीद रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, उसका जो भी क्वालिटी हो वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो. Quick facts. In local language, weekly markets are named according to the day when these are held, like Buddh Bazaar, Shani Bazaar, etc. This makes it more convenient for the people to remember. जो weekly markets होते हैं जिस जिस दिन में वो लगाए जाते हैं उसी नाम से वो जाने जाते हैं. जैसे Wednesday market, बुद्ध बाजार होता है, शनि बाजार होता है, सोम बाजार होता है. तो ये सारे मार्केट जो होते हैं वो कन्वीनियंटली याद में रह जाते हैं. Number 4, credit. There are some people who can buy things by paying cash, but certainly a majority of the people, especially the service class people, who buy things on credit and pay the amount in the next month when they get their pay. Credit facility would certainly add to the popularity of the market. Credit यानी कि अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप वो सामान खरीदना चाहते हैं तो उधार पे भी आप ले सकते हैं. अभी आप क्रेडिट पे खरीद लीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ जब आपको सैलरी मिल जाती है आप उसको पे कर सकते हैं. Number 5, income cycle.
The best retail shopkeeper is one who, keeping in mind the economic standards of his customers, maintains his stocks of his customers, maintains his stocks of different articles. A pair of shoes can be had for 200 or 300 and another can be had for 1000 or above. Likewise, the price of a shirt, a pajama, a pant or a coat can vary between a low, medium or high price. It is the shopkeeper who has to judge to which type of customers he has to cater and maintain his stocks accordingly. He should keep in mind that he has to cater to customers of all types. So, he should keep all varieties of things, both cheap and costly. तो आपके पास एक आइडियल शॉप वही होती है जिनको पता होता है कि कस्टमर्स किसी भी रेंज के आ सकते हैं. 100 रुपए के शूज खरीदने वाले भी आ सकते हैं, 500 के खरीदने वाले भी आ सकते हैं और 5000 के खरीदने वाले भी आ सकते हैं. तो एक शॉप में आइडियली हर रेंज के सामान वहां पे स्टॉकिंग होनी चाहिए. नंबर 6, price. Then the price of things available in the market should be quite genuine. No customer would buy things from such a shopkeeper who charges high price. If any retail shopkeeper has to survive, he should not only supply genuine or quality goods, but he should charge a reasonable price. हर कोई कस्टमर चाहता है कि अच्छी क्वालिटी लेकिन रीजनेबल प्राइस में उनको सामान मिलता रहे. तो एक शॉपकीपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तो रखे ही, लेकिन टाइम टू टाइम जो उनके चार्जेस है वो भी रीजनेबल रहे, अफोर्डेबल रहे. Indirect channels. In indirect channels, producers sell their goods through intermediaries or middlemen. These are of 4 types. Number 1, wholesalers. It is the wholesalers who buy the goods in bulk from producers and sell it in small quantities to the retailers. Wholesalers are people engaged in bulk buying and selling of goods. The wholesaler has no direct link with the consumer. He sells goods to the retailer who sells it further to the consumers. Wholesalers thus are required to buy, store and supply goods. They have to keep sufficient stock, give goods on credit to retailers or advance money to producers. They even resort to promotional activities. They have to keep themselves informed of changes in demands and preferences of the market, which they have to inform the producer. They even bear the risk of spoilage or change in preference of the गुड्स. तो होलसेलर्स जो होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट कंज्यूमर से नहीं होता है, वो रिटेलर्स को देते हैं और फर्दर जो रिटेलर्स होते हैं वो आपके कंज्यूमर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. होलसेलर्स को बहुत सारा स्टॉक भी एक साथ रखना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी चेंज इन डिमांड की वजह से जो आपका स्टॉक होता है होलसेलर्स के पास वो खराब भी हो जाता है. Number 2, retailers. A retailer is a person who takes goods from wholesalers and sells those goods to the consumers. They are the ones who are directly linked to the consumer. To encourage consumers to buy goods, a retailer even resorts to discounts on the purchases. They give goods on credit to the consumer. Their main aim is to retain the consumers. At times, producers sell goods directly through retailers. So, retailers are the main link with consumers. So, retailers वो होते हैं जो directly consumers के साथ linked होते हैं, wholesaler से सामान खरीदते हैं और consumers को बेचते हैं. और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा consumers को attract करने के लिए जो retailers होते हैं वो अपने products पे discount भी लगा देते हैं. प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स. तो प्रोड्यूसर से जाता है होलसेलर्स के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर्स के पास और फाइनली रिटेलर से जाता है कंज्यूमर्स के पास. Markets and equality. People are able to sell things they produce or grow in the market. They get opportunities to work in the market. It has also been observed that the maximum earnings or benefits are given to the rich people in the market. These are the people who have their own factories or land, etc. and make huge profits in the market. As compared to these, there are other less rich people who make only moderate profit. They are dependent on rich people for loans, raw materials, marketing or even employment. As they are dependent, they are also employed. Thus in market, everyone does not gain equally. Therefore, it is a democratic institution that helps in getting a fair wage in the market. To overcome explanations and bring equality in the market, it is essential to form cooperatives and all laws should be followed strictly. तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन सारे सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हैं. तो ऐसे जो लोग होते हैं जो मॉडरेट प्रॉफिट अर्न करते हैं वो अमीर लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं लोन के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में कोऑपरेटिव्स और कुछ सेलिंग लॉज भी बनाए जाएं जिसकी मदद से सारे लोग अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो सारे शायद इक्वली गेन कर पाएंगे. Role of intermediaries. Have you thought that from producer to customers, many intermediaries are involved? Sometimes this chain is limited to 2, but mostly these are 3, 4 and even
more intermediaries. If the farmer brings his produce in the market, he naturally gets more price for his produce. But in such a case, he has to arrange for the transport of his articles in the local market. Then at the wholesale market, he has to take the help of the selling agent who auctions the produce among different buyers. In this way, he can sell his produce in a single day and return to his village at the earliest. But if the produce in another state, then one mainly intermediary comes in his way. He may be a wholesaler or an agent who buys the farmer's produce in bulk and himself arranges for the transport of such articles to distant wholesale markets. तो इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो काफ़ी सारे लोगों के बीच में लिंक करके हेल्प करते हैं. जैसे फार्मर अगर प्रोड्यूस करेगा और उसको दूसरी जगह पर जाके उसको बेचना है, ऑक्शन करवाना है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. लेकिन इंटरमीडियरीज की मदद से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका प्रोड्यूस बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंच सकता है. In any way, the intermediaries play an important role in the fruit, vegetable, and even in the grain market. Thus, when different things come to us, don't forget that between the producer and the customer, various intermediaries are involved. The chain is like this: the producer who produces different goods, the agent who acts as a link between the produce and the wholesaler who keeps a large stock of wholesale articles, the retailer who gets things in small quantities from the wholesaler, the customer is the last in the chain who pays the final price for the product bought. This is the market phenomena. The earlier we understand it is better. तो आपके जो मार्केट फोर्सेस होते हैं उसमें इंटरमीडियरीज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. सबसे पहले आपके गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं, होलसेलर के पास दिए जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर से कस्टमर्स के पास जाते हैं, और इस चेन में जो कस्टमर्स होते हैं सबसे लास्ट होते हैं, जो फाइनली आपका जो प्राइसिंग होता है उसको पे करके वो सामान खरीद लेते हैं. Recap. A market is a place where the buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities. A market links the producers and consumers of goods and services through intermediaries such as wholesalers, retailers, etc. There are different types of markets: weekly markets, neighborhood markets, and supermarkets and mall. Most goods are sold directly to the consumer by the producer. The maximum earnings or benefits are given to the rich people in the market. So स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जाना कि मार्केट जो सेलर्स और बायर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो होता है. आपके इसके बीच में प्रोड्यूसर्स आते हैं, होलसेलर आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, इंटरमीडियरीज आती हैं और फिर लास्ट में जाके कस्टमर्स आता है. इसके अलावा आपके अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स भी होते हैं और जो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, एलीट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही कमाते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है.